गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। अब प्लेन का क्या मतलब है? प्लेन का मतलब है जो जिसकी दो डायमेंशंस हो, एक्स और वाई। लाइन एक सिंगल डायमेंशनल एंटिटी है, प्लेन एक टू डायमेंशनल एंटिटी है, और स्फीयर एक थ्री डायमेंशनल एंटिटी है। 1D, 2D, 3D। अब जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है एक्स वाई प्लेन में, तो उसे मोशन इन अ प्लेन बोल दिया जाता है। अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई, point moves from A to B. OA vector represent the position vector. OB represent the position vector at B. Displacement in time interval would be T2 minus T1. Displacement in time interval T2 minus T1 would be AB. Applying the triangle law, OA plus AB equal to OB. AB equal to OB minus OA. That is R2 minus R1. और मान लीजिए A के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, x1, y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। तो R1 जो है xi x1i plus y1j, and R2 would be x2i plus y2j. AB would be R2 minus R1 would be x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j. वेलोसिटी, अगर हम इसी चीज से वेलोसिटी कैलकुलेट करें, वेलोसिटी वुड बी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
displacement by time, V would be R2 minus R1 by T2 minus T1. जैसे कि हमारा वेलोसिटी उसमें मोशन इन वन डायमेंशन थी, इसी तरीके से हमारी वेलोसिटी मोशन इन अ प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी की भी डेफिनेशन उसी तरीके से डिराइव हुई है. अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट R2 minus R1 to V T2 minus T1. Assuming at time T1 is equal to 0, R1 would be R0, and at time T2 is equal to T, R2 would be R. Putting into the equation, R minus R0 is equal to VT. R would be R0 plus VT. अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम इक्वेशन को कंपोनेंट्स में. The equations in components. xi plus yj equal to x naught I plus y naught j plus vxi plus vyj. xi plus yj, अब उनको कॉमन ले लेंगे. x नॉट प्लस vxi vxti plus x plus y naught plus vytj. So x is equal to x naught plus vxt, और y is equal to y naught plus vyt. अब हम इससे ही इक्वेशन ऑफ पाथ निकालेंगे. इक्वेशन ऑफ पाथ t equal to
x minus x naught divided by vx. Y is equal to y naught plus vy x minus x naught by vx. अब अगर हम ग्राफिकली देखते हैं इसे, और ये हमारी पाथ की इक्वेशन हो गई है. अब हम देखेंगे मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ प्लेन. y x object at point A, x1 y1 comma v1. Object at point B, x2 y2 comma v2. Point object moving in xy plane. With acceleration, with uniform acceleration. A change in velocity, time taken. Change in velocity divided by time taken would be minus v1 t2 minus t1. क्या कर रहा हूँ? So v2 minus v1 a t2 minus t1. ठीक है. Then v2 would be v1 plus a t2 minus t1. At position A, time t1 is equal to 0 and velocity v1 is equal to v naught or u. Standard nomenclature u है initial velocity का. At position B, time taken, time at t2 is equal to t and velocity would be v2 would be final velocity v equal to u plus at. U can be represented in component velocity uxi plus uyj.
where u equal to ux square plus uy square। इसी तरीके से v को भी हम कंपोनेंट वेलोसिटीज में तोड़ लेंगे, vxi प्लस vyj, where v equal to vx square प्लस vy square। समझ में आई? अब जैसे पिछली बार किया था डिस्प्लेसमेंट के तरीके से, अब इसमें ही इसमें भी इस तरीके वैल्यू पुट कर देंगे कंपोनेंट्स को तोड़ने के लिए। vx i प्लस vy j to ux i प्लस uy j प्लस axi प्लस ayj। vxi प्लस vyj इक्वल टू ux प्लस axt i प्लस vx प्लस ayt j। vx इज इक्वल टू ux प्लस at और vy इज इक्वल टू uy प्लस at ayt। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेटेड मोशन एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t2 minus t1 v average v displacement by time। So that would be r2 minus r1 t2 minus t1 और r2 equal to r1 plus v average t2 minus t1। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी in uniformly accelerated motion accelerated motion v average is equal to initial plus final divided by 2। initial plus final
डिवाइड बाय 2। और आप इसको इक्वेशन में डाल देंगे v1 प्लस v2, तो t2 माइनस t1, r2 would be r1 प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, हम जो v2 का एक्सप्रेशन है हम वो इसमें डाल देंगे, जो v2 का ये वाला एक्सप्रेशन है वो हम उसमें डाल देंगे, उस वाली जो हमने अभी आगे इक्वेशन तैयार की है। v1 प्लस a t2 माइनस t1 t2 माइनस t1, ठीक है। जो r2 हो जाएगा वो हो जाएगा r1 प्लस v1 t2 माइनस t1 प्लस हाफ a t2 माइनस t1 स्क्वायर, और एट पोजीशन ए मान लेते हैं, एज्यूम r1 इक्वल टू r0, t1 इज इक्वल टू 0, v1 इक्वल टू u। एट पोजीशन बी assume r2 is equal to r, t2 is equal to t, and v2 is equal to v। So r would be r0 plus u t plus half a t square। अब इसको कंपोनेंट वाइज ब्रेक कर लेंगे, x1 xi प्लस yj इक्वल टू x0 i प्लस y0 j प्लस ux i uy j हाफ ax i प्लस ay j टाइम्स tu स्क्वायर, xi प्लस yj। अब हम इनको एक साथ कॉमन ले लेंगे i एंड j के टर्म्स में, x0 प्लस ux t प्लस हाफ a t स्क्वायर i प्लस y0 प्लस uy प्लस हाफ a t स्क्वायर j। So x is equal to x0 plus ux plus half at square, and y equal to y0 plus
यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन को भी कंपार्टमेंटलाइज करना है। अब हमें इन डेरिवेशन से हमें पता लगता है इक्वेशंस आर वेर इज इक्वेशंस आर सिमिलर to motion in one dimension। ठीक है, ये अभी हमारा मोशन इन अ प्लेन का इंट्रोडक्शन था। आगे हम प्रोजेक्टाइल स्टडीज करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।